influencers, social media influencers, and we cannot wait to deep dive into yours. And by deep dive, we start from your childhood. Okay. When did it all begin? How were you as a child? All right. So, as a child, I was a little studious, but I was kind of see, I was into music and I was into theaters and all that as well. So I used to play synthesizer, I used to play flute, I used to participate in plays and all. But at the same time, I was studious as well. I used to get good grades. This was up until I think till fifth, sixth, or maybe eighth standard. It was like that. Then from ninth, I got a little distracted. I wanted to, yeah, I was studying, but from ninth and 10th, the grades were not coming as good as they used to come till 8th. But yeah, I coped up everything in class 12th. So it was all good. So I would say, yeah, I was an average child with a knack for a little bit of studies. Yes. So what subjects were you interested in? Initially, I was interested in science. In fact, I took science in my class 11th. So I was Mhm. a chemistry, mathematics, and computers. I initially wanted to be a software engineer. So I even prepared for JEE exams. I even prepared for all the engineering exams. Mhm. Unfortunately, I couldn't get through any good college at that time. Mhm. So I shifted to BCom and commerce, and then I went ahead and did my chartered accountancy. Wonderful, wonderful, wonderful. So did you? How was your journey there? Let's talk about that. Like what kind of a journey you had during your college life or your accountancy life? Okay, so what happens in CA is there's no college in CA. So CA is a completely open, open course, distance learning course. And Mm-hmm. in college, I did my college also from an open university, from a distance learning university, for the distance learning university. So I had to just go to the college to take my exams. So Oh. only for the final exams, I used to go to the college. Initially, CA was very good. Initially, I cleared my first two levels of CA. There are three levels of CA, and in between there used to be a 3 year practical training. We called it an articleship. Now it's a Mm-hmm. 3 year training, but back when I was doing it was a 3 year training. So Mm-hmm. initial two levels were very good. I cleared it in one or two attempts. I enjoyed my articleship a lot. But the CA final level was a little difficult for me to cope up. So I took a lot of time in clearing CA final. But Mm-hmm. in fact, the time that I took for myself in CA final to prepare the young CA students who are right now to, I tell them, देखो ये गलतियां मैंने की थी, ये सब तुम लोग मत करना. And it's very relatable. I relate to the students a lot क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि ये लोग वही वाली गलतियां कर रहे हैं जो मैं करता था. And I'm able to guide them in a better manner. Wonderful. So what are you most engaged in now? Teaching CA students and creating content over finance, around finance. So I'm a full-time educator. I work at Adda 24/7. I teach CA students. I teach business mathematics, logical reasoning, statistics to CA foundation level students, and I teach taxation to CA intermediate level students. I also have my own company. It's called Fintax by Nishant. And in Fintax by Nishant, I create content around stock markets and personal taxation. I also create a lot of courses. So all my time goes into writing books for CA students, teaching CA students, creating content on stock markets, and so on. Wonderful. Now, financial freedom. Yeah. Does that word mean to you? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपको पैसों के लिए काम नहीं करना. आपको अपने आपको अपने पैशन के लिए काम करना है. व्हेन यू वर्किंग, knowing very well that even if you don't get any money out of the work that you're doing, that I think is financial freedom. When you walk into a store and you can pick up anything and you buy it without looking at the price tag, that is financial freedom. I think financial freedom का तो बस यही है कि आपको पता है कि हाँ आपके पास पैसे हैं और आपको सोचना नहीं है और आपको जो मर्जी आ रहा है, आपको मतलब वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स जो भी आपके हैं, वाइल्डेस्ट ऑफ पैशंस जो भी आपके हैं, आप उनको फॉलो करो. दैट आई थिंक इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी. Fantastic. Now, when was this aha moment of yours then when you thought that, you could guide people towards that? Aha moment. I must say, मेरा एक दोस्त है, he's a childhood friend, and Mm-hmm. I was doing a little bit of investments on my own. So he came to me once. He was like, नहीं यार, stock markets तो gamble होता है, ये है वो है.
तो आई गाइडेड हिम, एंड उसका फिर हम लोगों ने 10,000 रुपए कुछ इन्वेस्ट किया था, 10,000 रुपीज हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था एक प्रॉपर Mm. स्ट्रैटेजी बनाकर। एंड ही वॉज, मैंने उससे बोल दिया था कि चल ठीक है, तू मान ले 10,000 रुपए तूने मुझे दे दिए, कोई बात नहीं, खो गए ना, मेरे को दे दिए तूने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आफ्टर अ ईयर ही कॉल्ड मी एंड ही सेड के उस 10,000 रुपीज पर 50% का रिटर्न आ गया है। तो दैट वाज एन आहा मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि यार अगर मैं इसको गाइड कर सकता हूँ, तो आई थिंक आई हैव दिस नैक इन मी कि मैं बाकी लोगों को भी गाइड कर सकता हूँ। एंड दैट्स व्हेन आई came up with the concept of Fintax by Nishant, where I wanted to make educational content related to stock markets. That is a very good topic overall, of course. Now, taxation and investment. Which of these ones actually excite you more? Taxation or investment, which of these excites me more? I Yeah. must say, सी दोनों के अपने मेरिट्स हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट इज लाइक ग्रोथ, एंड टैक्सेशन इज लाइक सॉल्विंग अ पजल, कि आपके पास Yeah. इनकम है तो आपको लीगल वे से ढूंढना है। इट्स लाइक टैक्सेशन में Right. यू हैव टू बी वेरी लीगल, एंड उसमें से आपको ढूंढना है कि किस तरह से आप टैक्स प्लान कर सकते हो। बट हाँ, इफ आई टू पिक वन, आई वुड गो विद इन्वेस्टमेंट्स, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंts, Yeah, बिकॉज I kind of thought so. That's या why I was like, maybe I should ask him to find out that, what does he find more exciting, given that both are very exciting, राइट you know, topics overall. राइट Now, do you have a personal investment strategy or philosophy? Yes, yes, absolutely. My personal investment strategy is, see, I'm a risk taker, but only when I understand the risk. तो वैसे Of अगर देखा जाए तो आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, लेकिन अगर Mm, मुझे रिस्क लेना होता है तो आई हैव टू फर्स्ट गो थ्रू इट। अभी रिसेंटली कुछ हुआ था, आई वाज एक्सप्लोरिंग समथिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, सो mm. आई वाज ऑलमोस्ट आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू मेक माय इन्वेस्टमेंट, बट देन आई थॉट, देन आई स्टॉप्ड माय सेल्फ। मैंने कहा यार पहले एक बार थोड़ा सा इसको और देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ मतलब उसमें फ्लो में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। आई Everyone's talking about it. Yeah. so I've heard someone say something about this particular coin, so that's why I'm going to invest in this coin. So I had Hmm. done everything. I think 99% of the job was done. I was just one click away from making my investments. But then I stopped myself. I like नहीं यार, जो अपनी investment philosophy है कि पहले पढ़ के उसके बाद करेंगे, वही करेंगे। Wonderful. It's always best to stick to your philosophy overall. Right. Now, what would you say to someone who's, fearful of investing into the stock market? Like, what is your approach like? See, अगर if someone is fearful, it's absolutely understandable. Even I was very fearful. In fact, I remember I was being fearful when I was opening my demat account also. So I Mm, want to share the details of my pan card and bank account with some random website online. So it's completely understandable. But to a person who's fearful, I would just say you can start small. You can start with maybe 100 rupees a month, maybe a 500 rupees a month. The amount that you won't regret losing, even if you lose it. Although I'm sure you won't lose it, I can guarantee you won't lose it. But still, even if you lose it, you won't regret it. So maybe 100 rupees a month, you can start with it. Uh, and then spend some money learning about it from authentic sources. This is what I did. uh, mm, I spent a lot of money learning about stock markets from authentic sources. Like I took courses, I attended webinars, I read books, and once I started understanding it, you kind of start developing your own investment strategy. That okay, okay, because every book has some author's mindset behind it. So when you read mhm, so many mindsets, when you understand so many mindsets, you kind of relate with someone, you kind of resonate with some people, and then you develop your own investment strategy. So this is what I would advise: you start right away with 100 rupees. Start maybe in an index fund, in a Nifty 50 index fund. You can start right away, but mm, yeah, start learning about stock markets, because once you mm. learn about them, you'll understand this. It's a whole new world altogether, and it's so good, so good. So, what are the top three mistakes you see someone making when they're just starting out? Uh, Number one is going after the tips. Like I see a lot of people, even they text me on Instagram and they say that I have the stock of XYZ company and I bought it at this much. The stock is sitting at this much. Should I sell it or should I hold it for a longer period of time? So I believe पैसा आपका है तो decision आपका ही होना चाहिए. So don't run after tips. दूसरा, the want or the longing for becoming rich overnight, तो वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बिकॉज ओवरनाइट रिच नहीं बन सकते स्टॉक मार्केट से. इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स डेफिनेटली अ लॉन्ग टर्म गेम. एंड तीसरी जो मिस्टेक लगती है वो ये लगती है कि पीपल डोंट
पीपल लोगों के पास पेशेंस नहीं है एक्चुअली, उतनी ज्यादा पेशेंस नहीं है कि समझ के या सीखने की एक्चुअली चाह थोड़ी सी कम है. दे डोंट वांट टू लर्न, दे जस्ट वांट, लाइक आई टेक अ लॉट ऑफ लेक्चर्स आल्सो. तो वो लेक्चर्स के बाद जब जो Q&A राउंड होता है ना, वहां पर भी पीपल कीप ऑन आस्किंग मी अबाउट स्टॉक्स ओनली, कि इसमें डालें, इसमें डालें, इसमें डालें या नहीं डालें. तो एक बार सीखना चाहिए, तो वो सीखने की जो लैक ऑफ इच्छा होती है ना, वो आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स. Right. I think people shouldn't just think that this is actually a get rich quick scheme, you know. एग्जैक्टली. So that's one of the key things I think most people usually think about. राइट. And that's when the frustrations and all of that begin. It's more like an investment. They should look at these things as investments. Right. And one more thing, it's lack of diversification. Like they'll put all of their money in only one thing. Like Mhm. even if we talk about stock market, so they'll put all their money in one stock, thinking again, get rich quick scheme. ऐसा वाला. So this is also one of the mistakes. So, what are some tax saving strategies that most people are unaware? That you Okay. think that they should be knowing? Okay. So when people are employed in a company, so they get Mhm. something known as HRA, house rent allowance, and people get exemption of house rent allowance. But people who are not employed and they are still living on a rent, they can still take the deduction of the rent that they are paying if they use Section 80GG. So there's a Section 80GG in the old scheme of taxation. और वहां पर थोड़ा सा उसके बारे में अगर और डिटेल में लोग देखेंगे तो वो समझेंगे कि अगर वो रेंटेड प्रेमिसेस में रह रहे हैं तो जो भी वो रेंट पे करते हैं उसका डिडक्शन वो लोग क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80GG. दैट्स नंबर वन. नंबर टू इज NPS, नेशनल पेंशन स्कीम. तो नेशनल पेंशन स्कीम का रिडक्शन, एक तो नेशनल पेंशन स्कीम इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट आई वुड से. Mhm. लॉन्ग टर्म में इट विल ग्रो एंड इट विल गिव यू अ गुड रिटायरमेंट कॉर्पस. और दूसरी बात, उसका डिडक्शन, एक तो 80C की जो लिमिट होती है, सेक्शन 80C की लिमिट, उसमें 1.5 लाख रुपीस तक का डिडक्शन वहां पर अलाउ होता है. और Acha. एडिशनल 50,000 रुपीस का डिडक्शन आपको मिलता है 80CCD 1B में. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट पीपल डोंट नो अबाउट, कि नेशनल पेंशन Wow. में अगर हम लोग पैसा डालते हैं तो एडिशनल 50,000 रुपीस का डिडक्शन 80CCD 1B में मिलता है. एक तो ये चीज हो गई. नेक्स्ट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. So if somebody is eligible, they can create their own HUF, and HUF is like a separate PAN for your own family. So वहां से इनकम हम डाइवर्ट कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं. Another thing is tax efficient investments. Like people Mhm. invest ओनली थिंकिंग अबाउट सेविंग टैक्सेस. लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम टैक्स सेव करने के साथ साथ अपने पैसे को ग्रो भी कर सकते हैं. तो ELSS, equity linked saving scheme, is a Mm. very good option which I think people should start investing in if they don't do it already. Equity linked saving schemes are basically mutual funds जो कि equities में इन्वेस्ट करते हैं, और उनमें Mhm. आपको सेक्शन 80C का 1.5 लाख रुपीस का रिडक्शन भी मिलता है. सो Mhm. द ओनली ड्रॉबैक इज दैट आपका पैसा 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा, तो आप Acha. उसको 3 साल से पहले पहले उसको विथड्रॉ नहीं कर पाओगे. बट These are the insurance plans, नो, or if you can name, are these the insurance plans, or which ones are? नो, This नो. is just a personal question. ओके. I mean, can you give examples of these ones? या श्योर. सो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ELSS हो गया. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू योर ब्रोकर. आप अपने ब्रोकर की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर ELSS टाइप कर दीजिए. तो Mm. ELSS के जितने भी म्यूचुअल फंड्स होंगे, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का भी ELSS फंड आता है अलग से. Mm. जैसे वन एग्जांपल इन व्हिच आई आल्सो इन्वेस्ट, दिस नॉट अ एडवाइस, दिस नॉट अ रिकमेंडेशन, बट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ELSS फंड. सो बेसिकली Mm. ELSS फंड्स आर दोस फंड्स जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है कि हाँ, अगर किसी बंदे ने हमारे अंदर पैसा डाला तो उसको टैक्स का एग्जेम्पशन मिलेगा. अब निफ्टी 50 के बारे में अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के फंड्स हैं. एक तो UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, मैंने उसमें Mm. पैसा डाला तो वहां पर मुझे टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. बट अगर मैंने इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ELSS में पैसा डाला तो वहां पर मेरा पैसा गया तो अभी भी निफ्टी 50 की कंपनीज में, लेकिन मुझे टैक्स का एग्जेम्पशन, टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा 80C में. दैट्स द ओनली डिफरेंस. Okay. ऑल्सो दूसरा डिफरेंस इज कि अगर मैंने UTI निफ्टी 50 में पैसा डाला तो मैं उसको कभी भी निकाल सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं आएगी. बट अगर मैं ELSS में पैसा डाल रहा हूँ तो फिर मैंने अगर उसको 3 साल के पहले निकाला तो फिर पेनल्टी भी लगेगी. एंड जो भी रिडक्शन मुझे मिला था वो सारा रिवर्स हो जाएगा. देन आई हैव टू पे टैक्स ऑन Okay. Wow, I really hope that people actually listen to these details and actually get a lot of benefit out of this. इट. Now, do you have a favorite underutilized tax deduction or credit that people often overlook?
yes, एक तो ELSS के बारे में बताया मैंने, and Hmm. one more thing again, if you're employed, so there's this 80 CCD2, like national pension scheme that I was talking about. So Mhm. if you can talk to your employer that some of your salary can be utilized for the new pension scheme, the national pension scheme. So इसमें कर क्या सकते हैं कि even if you are opting for new scheme, like most of the deductions are not available under the old scheme, under the new scheme. मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस जो जैसे 80C, 80D, 80CCD ये सारे हैं, ये ओल्ड स्कीम में अवेलेबल है, न्यू स्कीम में अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक हाँ, 80CCD2, 80CCD सबसेक्शन 2 वाला जो डिडक्शन है वो न्यू स्कीम में भी अवेलेबल है। और अभी रिसेंटली उसकी लिमिट भी बढ़ गई है, लाइक 14% ऑफ योर सैलरी। तो आप अपने एम्प्लॉयर से कह के अपनी सैलरी का 14% उसमें डलवा सकते हो अपने एम्प्लॉयर से, और आपको हम्म, न्यू स्कीम में भी उसका डिडक्शन मिलेगा। तो ओके। या तो ये वाली चीज है, कई सारे लोगों को नहीं पता है। पहले इसका 10% का ही रिडक्शन होता था, बट अभी रिसेंटली 23 जुलाई को जो बजट आया था उसमें इस लिमिट को बढ़ाकर 14% कर दिया। तो 14% ऑफ योर सैलरी कैन बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD2 इफ योर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द नेशनल पेंशन स्कीम। Got it. Very cool. Very cool. Now, what are some of the common misconceptions about tax planning that hinder people from saving effectively? दो तीन है। पहली बात तो लोगों को लगता है कि टैक्स प्लानिंग सिर्फ रिच लोगों के लिए है। एक आम आदमी टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक सपोज यूर गोइंग फॉर एन एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आपको जाना है, आपको अब्रॉड जाना है, आपको इंडिया में ही हायर एजुकेशन करनी है, एंड यूर अप्लाइंग फॉर अ लोन। सो वट एवर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यूर पेइंग ऑन दैट लोन, यू कैन क्लेम इट एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। सो लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, इसका भी डिडक्शन मिलता है, ये कई सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिच लोगों के लिए है, नॉर्मल लोग, क्योंकि जो हायर एजुकेशन के लिए लोन तो सभी लोग लेते हैं, हम सारे लोग ही लेंगे अगर हायर एजुकेशन के Sure. लिए हमें जाना होगा। एंड Yeah. एंड उस पे जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं उसकी कोई लिमिट भी नहीं है, इट्स अनलिमिटेड। तो फॉर 8 years व्हेन यू टेक द लोन, वंस यू स्टार्ट अर्निंग, उसके बाद आप जो भी इंटरेस्ट पे करोगे तो दैट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री, तो उसका आपको रिडक्शन मिल जाता है। पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात, लोगों को लगता है कि टैक्स प्लानिंग इज लास्ट मिनट। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लाइक जब मार्च आएगा तो मार्च में लोग कुछ ना कुछ टैक्स प्लानिंग के बारे में सोचना शुरू करेंगे कि अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, जिससे इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारे इन्वेस्टमेंट्स हो जाएं। कई सारे लोगों को वो भी नहीं पता होता, तो कई सारे लोग सोचते हैं जब रिटर्न फाइल करने का टाइम आएगा तब हम इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करेंगे, और तब तक तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है। और तीसरी चीज है कि कई सारे लोग सिर्फ और सिर्फ टैक्स सेविंग पर फोकस करते हैं, वेल्थ बिल्डिंग पर फोकस नहीं करते। तो जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ईएलएसएस फंड्स का एग्जांपल बताया था, ईएलएसएस फंड इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ saving taxes as well as building wealth. Mm. So these are the three things I would say. Wow, very cool. Now, suppose someone has 50,000 rupees to start with. Yeah. How would you recommend they allocate the funds? Okay. अगर 50,000 रुपीज है ना, फर्स्ट आई वुड से क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। आप इसका 50,000 का 20% यानी 10,000 रुपीज उसको सेट असाइड कर दो, उसको एक इमरजेंसी फंड में डाल दो। उसके बाद 25,000 यानी पूरे 50,000 का 50%, तो 25,000 आपको डालना चाहिए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में। आई एम वेरी बुलिश ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको 25,000 रुपीज डालने चाहिए। फिर 10,000 आपको डालने चाहिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टॉक्स में। तो ये ब्लू चिप स्टॉक्स नहीं होंगे, ये छोटे छोटे स्टॉक्स होंगे, लेकिन जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी होगी, तो उन स्टॉक्स में आपको डालने चाहिए। और 5,000 जो बचता है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने स्किल्स पर, स्किल्स के इंप्रूवमेंट पर। See, until and unless you keep on constantly investing on your upgradation, just investing money in stock markets won't work. There are a lot of things which I didn't know 4 years ago. There are a lot of things which I didn't know 3 years ago. There are a lot of things that I didn't know maybe 1 year ago. And I'm absolutely sure there are a lot of things which I still don't know now, which I will be knowing 1 year later or 2 years later. So No, this I is, think it's very important to keep upgrading yourself. And given the way the world is literally on a fast-paced mode, you have to keep upgrading yourself. Or absolutely. else you're like literally like out of the race. There is no doubt about that part. Now let's talk a little bit about alternative investments. What do you think about those? Alternative investments like real estate or cryptocurrencies, right? So see, alternative investments, if we talk about real estate, so there are two ways of investing in real estate. One, to aap jaake property kharid lo, but that involves a lot of capital, that will require a lot of capital, which I don't think a lot of us will have, or maybe if we'll have it, to usme kai sare saal lag jayenge to
accumulate that. सो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू। तो हम लोग जब अपने ब्रोकर पे लॉग इन करेंगे, चाहे वो ग्रो हो, चाहे जीरोधा हो, चाहे कोई भी हो, और वहां पर हम REIT अगर टाइप करेंगे तो वहां पर आपको REITs मिल जाएंगे। तो इंडिया में 3 या 4 ही REITs हैं, उनमें हम लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक तरह से म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो रियल एस्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो वी कैन ओन अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी विद फ्रैक्शनल पार्ट में हम लोग ओन कर सकते हैं। तो अच्छा तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। और दूसरा क्रिप्टो करेंसीज, अगेन क्रिप्टो करेंसीज की अभी मुझे ऐसा लगता है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कि उनकी एसेट कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं, या उन वो अंडरलाइंग एसेट कोई नहीं है। जैसे स्टॉक्स के पीछे अंडरलाइंग एसेट है कंपनी के फंडामेंटल्स, राइट। तो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना अगर आपको है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट अगेन रीड अबाउट इट। लेकिन उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जितना अगर आपका डूब जाए तो आपको फर्क ना पड़े। दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग। आई इन्वेस्ट ओनली दैट मच मनी इन क्रिप्टो करेंसीज जो अगर कल को चल के डूब जाए तो मुझे फर्क ना पड़े। सो दिस इज माई एडवाइस, दिस वुड बी माई एडवाइस ऑन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। Fantastic. Of course. Now let's talk a little bit about some, success stories. ओके, A couple of memorable success stories from your guidance. ओके। सो एक तो मैंने आपको उसके अपने फ्रेंड के बारे में बताया था जो 10,000 लगाया था और उसको 50% का रिटर्न मिला था। ऐसे ही 2-3 और सक्सेस स्टोरीज हैं। सम क्लाइंट्स जो इनिशियली आते हैं उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट तो सट्टा है, बट कोई ना कोई उनको बता देता है कि नहीं इस बंदे से बात करो, देन दे कम। और फिर हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं एंड Mm, देन 2-3 इयर्स, 2-3 साल तक मुझे बहुत समझाना पड़ता है कि नहीं कोई बात नहीं। अब वो डिपेंड करता है, कभी अगर मार्केट बुल रन में होगा तब तो दे विल सी देयर वेल्थ क्विकली ग्रोइंग। लेकिन अगर कभी mm, मार्केट बेयर रन में होगा, अभी 2 दिन पहले ही हुआ था, आई सजेस्टेड समथिंग टू अ क्लाइंट और अभी उनको वो 10% के लॉस पे है। तो ही इज कॉन्स्टेंटली वेरी वरिड कि यार ये तो 10% का लॉस हो गया और ऐसे कैसे ये वो। बट इट हैपेंस, इट कीप्स ऑन हैपनिंग। तो अभी धीरे धीरे mm, फिर उनको वो समझाना होता है कि नहीं अभी जस्ट जस्ट वेट फॉर 2 इयर्स। 2 साल की बात हुई थी, आप 2 साल तक रुकिए। तो ये ठीक है, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे चलता रहेगा बट लॉन्ग टर्म में इट विल ग्रो। सो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज में यही है कि वो जब आते हैं तो कुछ और माइंडसेट के साथ आते हैं और जब जाते हैं फिर वो किसी दूसरे माइंडसेट के साथ जाते absolutely, of course. Now, what would your advice be to young people हैं। who are just beginning their, financial investments? Young people are just beginning their financial investments. Start small, learn, understand, and have a long term horizon. Really have a long term horizon and set your goals straight. Absolutely, you should set your goals straight. अभी जैसे अगर आपको ये है कि आप अभी अभी कॉलेज में गए हो, आपको पता है 4 साल का कॉलेज है और 4 साल के बाद यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू परसू फॉर हायर एजुकेशन और समथिंग। तो दैट कुड बी वन गोल, Mm, pursue of higher education, pursuit of higher education. Your goal could be a Euro trip. That's absolutely fine. So have your goals clear और फिर उन goals के हिसाब से you decide, sorry, उन no, goals के हिसाब से you have to decide कि कहाँ पर कैसे invest करना है। तो सेव करना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा पैसा इंडेक्स फंड्स में डालना शुरू करो जिससे स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक कि हम पूरा सीख लेंगे तभी स्टार्ट कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसे हम कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। that तो never happens. Yeah, that never happens. तो yeah. स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। स्टार्ट स्मॉल, कीप ऑन लर्निंग। जैसे जैसे सीखते रहो वैसे वैसे थोड़ा सा और उसको डाइवर्सिफाई करते रहो, वैसे वैसे अपने गोल स्पेसिफिक पैसे वैसे इन्वेस्टमेंट्स करते रहो। Mm. Great. Now, what about personal financial habits? Like saving, expenses, budgeting, etc. या What roles do you think they play? दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज यू नो व्हेन आई वाज अ किड, तो जब भी हम लोग पापा के साथ शॉपिंग पे जाते थे, माय डैड ऑलवेज यूज्ड टू आस्क मी कि बजट कितना है। और ये मेरे किसी दोस्त के साथ नहीं होता था। ओनली माय डैड ऑलवेज यूज्ड टू आस्क मी, हम बुक्स खरीदने जा रहे हैं क्या बजट है, कपड़े खरीदने जा रहे हैं क्या बजट है, गेम्स खरीदने जा रहे हैं क्या बजट है। एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी इरिटेटेड दैट टाइम कि यार मुझे क्या पता क्या बजट है, मुझे तो पता भी नहीं चीज कितने की आएगी, तो इसलिए तो मैं आपके साथ जा रहा हूँ, आप दिलाओ जो भी है, मैं तो छोटा हूँ। तो बट लेटर ऑन मुझे काफी बाद में रियलाइज हुआ कि उससे वो बजटिंग की आदत डलवा रहे थे बचपन से कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनीथिंग, चाहे वो शॉपिंग हो चाहे कुछ भी हो, यू हैव टू हैव अ बजट। एंड वंस यू हैव अ बजट ना, तो आपको एक पता रहता है कि देखो इससे बाहर हमें नहीं जाना है, यहां तक हमारा होगा। सो इन बजटिंग देयर इज अ ग्रेट रूल कॉल्ड 50-30-20 रूल,
जहां पर आपको अपनी मंथली इनकम का 50% अपनी नीड्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, 30% वांट्स पे और 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो व्हेन यू क्रिएट अ बजट लाइक दिस, यू नो कि अगर मेरी सैलरी 50,000 रुपीज है, तो आई कैन नॉट स्पेंड, आई शुड नॉट स्पेंड मोर देन 25,000 रुपीज ऑन माई नीड्स। इफ माई नीड्स, इफ आई एम स्पेंडिंग मोर देन 25,000 रुपीज ऑन माई नीड्स, तो इसका मतलब है आई नीड टू कर्टेल डाउन माई नीड्स। अगर मैं वांट्स पे 30% से ज्यादा स्पेंड कर रहा हूं, तो आई नीड टू कट इट डाउन। ऐसा बजटिंग से पता चलता है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल हैबिट है ट्रैकिंग द एक्सपेंसेस। मेनी पीपल डोंट डू दैट, एंड अभी it's become even easier tracking the expenses, because most of the payments that most of the people do are through UPI and Google Pay and Paytm and PhonePe and so on. So most of the transactions are banking transactions, and there are some amazing budgetary apps. Like there's an YNAB. YNAB is an app. You need a budget. So वहां से आप अगर लिंक कर देते हो, तो it will automatically track all your expenses. It will help you create a budget, and it'll even tell you कि आपने इस महीने कितना पैसा किस एरिया में स्पेंड किया, ये एंटरटेनमेंट में स्पेंड किया या ये नीड्स पर स्पेंड किया। तो ये सारी जो फाइनेंशियल हैबिट्स होती है ना, दे एक्चुअली हेल्प यू इन लीडिंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। नहीं तो क्या होता है, इनिशियली हमें रियलाइज नहीं होता कि कब आगे जाकर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, एंड बाय द टाइम वी रियलाइज इट, इट्स ऑलरेडी टू लेट। सो ये कुछ पर्सनल हैबिट्स हैं, ये बहुत हेल्प करती हैं। और तीसरी चीज है पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप को पहले आपको पे करना पड़ेगा, किसी दूसरे को पे करने से पहले। You have to save some money, you have to spend in upgrading yourself, ये सारी चीजें। Very, very good. Very good. Wow, I'm just mesmerized and I'm just taking it all in, you know. So now, you know, you have worked with thousands of people. Would you think of that? What do you think it's that one habit that actually prevents people from not making it somewhere? Impatience. Impatience, the only impatience and lack of consistency. लैक ऑफ कंसिस्टेंसी के अभी इस महीने नहीं इन्वेस्ट कर सकते, पहली बात। और दूसरा इम्पेशंस के, एंड आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे अंदर भी बहुत इम्पेशंस थी, और मुझे भी कई बार लगता था नहीं अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई कैन स्पेंड मनी ऑन दैट एंड नॉट इन्वेस्ट। दीज आर द टू थिंग्स आई वुड से, इम्पेशंस एंड लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। Now, if you had to invest in this one stock for next 10 years, which one would that be? Like, we're not going to hold you to it. Okay, only one stock for the next 10 years. Yeah. Only one stock, I must say it has to be ITC. ITC is primarily a cigarette company, but उसका जो FMCG वाला सेक्टर है, जैसे सनफीस्ट है, आशीर्वाद आटा है, yippee नूडल्स हैं, इवन क्लासमेट के रजिस्टर्स भी आईटीसी के होते हैं। आईटीसी का अपना होटल ब्रांड भी है। तो अभी इनफैक्ट आईटीसी और आईटीसी होटल्स का डीमर्जर भी हुआ है। बट आईटीसी एज अ ग्रुप इज वन स्टॉक दैट आई वुड होल्ड ऑन टू फॉर द नेक्स्ट 10 years। डिविडेंड का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। it's been ITC as a company has been around for more than 100 years, and चाहे कुछ भी हो जाए, FMCG तो चलना ही चल रहा है। I mean, Absolutely. And they're quite diversified as well. very diversified. Right. Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah, that makes sense. Now, if you won a massive lottery and you have millions to invest, what would your strategy be? Where would you invest? What would you do with it? How many millions? Just कितने? a massive lottery, you know. Like $2-3 million? Sure. Okay. So $2-3 million का मतलब हो गया like 24 crore रुपए, 24 crore rupees. So I will straight away put 20 crore rupees in Nifty 50 index fund. Straight away. And then I'll start an SWP. So what an SWP is कि आप म्यूचुअल फंड से हर महीने कुछ कुछ पैसा निकालते रहते हो। तो if you have 20 crore rupees in a Nifty 50 index fund, assuming it gives 12% of return, you can actually take out 15 lakh rupees every month for the rest of your life, and your investment will still not be depleted. तो वो उसमें रहेगा, क्योंकि बचे हुए पैसे पर कंपाउंडिंग लगातार हो रही है। एंड आई थिंक एक इंसान के लिए महीने में 15 लाख रुपए आर मोर देन इनफ टू डू वट एवर ही वांट्स टू डू। Absolutely. 15 lakh rupees, Totally. others, Yeah, yeah. right? If Or you're in India, absolutely, no doubt. yeah, Doesn't matter, like, you know, absolutely. yes. So 20 crore rupees I'll put in an FT 50 index fund to secure financially for the rest of my life. And 4 crore rupees, the remaining 4 crore rupees, I would take a world tour. I really want to go on a world tour. Really want to go on a world tour. Very cool. Yeah. Very nice.
Now, if you could have dinner within with any investor, past or present, Okay. who would you choose? Undoubtedly Warren Buffett. Undoubtedly Warren Buffett. Uh, he simplifies things in such a wonderful manner, Hmm, and so I would really like to have a good conversation with him, uh, Mr. Warren Buffett. Definitely. great. Now, has there been any quirky investment that you've encountered, which you kind of thought that, wow, that's an interesting move? Yes, recently I read, I think 2, 3 months ago only I read that people are investing in wines and whiskeys now. So, in fact, there's a proper wine index which is which is giving good returns. So people are investing in rare whiskeys and wines, and they are holding on to them for a longer period because, and since they are rare, so उनकी value time के साथ appreciate होती रहती है. And I was like, यार ये मुझे नहीं पता था कि हम लोग वाइन्स और विस्कीज में भी पैसा इन्वेस्ट कर. Cheers to That people investments. can, yeah, 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 yeah. Well, yeah, that's true. There's a lot of like luxury goods as well, which actually, with time, they actually grow with time as well. Yeah. Wonderful. The value grows with time. Yeah. Excellent. Now let's talk a little bit about your social media. Okay. How did that journey start? My social media. Okay. So I was initially associated with Grow. I'm still associated with Grow. And I used to conduct a lot of sessions with Grow for a lot of college students and all. Uh, तो वहीं से फिर मुझे लगा कि I should have something on my own as well. एंड ग्रो की वजह से, ग्रो के साथ एसोसिएट होने की वजह से मैंने बहुत कुछ पढ़ के बहुत कुछ सीख लिया था, जितना ग्रो के सेशंस के लिए रिक्वायर्ड नहीं भी होता था. इनफैक्ट आई रिमेंबर इनिशियली फिर मैंने कुछ सेशंस लेने शुरू किए थे तो ग्रो पीपल टोल्ड मी कि आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर मूव हो रहे हो. हमें जो जो हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको बेसिक लेवल की हम लोगों को चीजें सिखानी है. तो पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये व्हेन दे सेड, क्योंकि फिर मुझे लगा था कि अच्छा आई नो, मतलब एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी मुझे समझ में आ रहे हैं एंड आई एम एबल टू डिलीवर देम एज वेल. तो फिर वहां से फिर मेरा मन किया कि ओके आई शुड ओपन एन इंस्टाग्राम चैनल स्पेसिफिकली फॉर imparting stock market education. I also have another Instagram channel. It's called CA Nishant Kumar. That is specifically for students. So that has been around since 2022. तो वो 2022 से चल रहा है. That is only focused on CA students, but focusing completely on investing, stock markets and taxation. I opened this channel on 1st July 2023. 1st July is a CA day. तो CA डे पे मैंने इसको स्टार्ट किया था. इनिशियली आई वाज नॉट कंसिस्टेंट, आई कुड नॉट बी कंसिस्टेंट, बट उसके बाद फिर आई थिंक 2024 से आई टुक इट वेरी सीरियसली एंड आई हैव बीन मेकिंग कंटेंट एवर सिंस. एंड ऑडियंस हैज बीन वेरी लवली एंड सपोर्टिंग, और बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं. आई हैव लॉन्च्ड अ लॉट ऑफ कोर्सेज एज वेल, जहां पर एकदम बेसिक से आई टीच अबाउट स्टॉक मार्केट्स. तो उसमें मजा आ रहा है, उसमें मजा आ रहा है. दिस हैज बीन द जिस्ट ऑफ माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी. Great. Now let's talk about any fan moments that you've had, follower moments. Like what kind of DMs do you receive? Or, now that, you're pretty active on social media, Yeah. what kind of, tell us about some memorable DMs that actually make you think like, wow, I'm actually making an impact. When people ask me for proper consultation advice and they are ready to pay me for that, when people do that, that makes me realize कि, okay, see what happens is when you create content on social media, the comments that you receive are mostly negative comments, but the likes, shares and the saves, they say it all. The views, likes, shares and saves, they say it all, right? Because most of the people who are appreciative of your content, they won't comment on your content, they will just like it or they will just save it and they will just share it. uh, so initially I used to feel a little disturbed seeing the negative comments, but then I realized कि, okay, this is going to happen in no matter what you do. You can't please everyone and you don't even need to please everyone. Exactly. You're So on a public platform. yeah, these are public platforms and this will keep on happening. But when people started DMing me, I recently started a series called Fundamental Analysis in 30 Seconds. So I used to pick a stock and I used to start with a quirky fact about that stock, that, oh, this stock is down 30% from its all-time high. Should we invest in it or not? And then I used to say, कि चलो इसका fundamental analysis करते हैं सिर्फ 30 सेकंड में. And I used to talk about some key ratios, some key changes that that company has made, or why has the stock price been down? Is the stock price going to go up or not?
And after that, I got flooded with DMs when people were Hmm. asking me to fundamentally analyze this particular stock or that particular stock ऐसा करके. Recently जो सबसे ज्यादा touching moment था वो ये था कि one person said कि I have some property in Canada and Hmm. I'm planning to sell it off, and I need your advice. Where should I sell? Should I sell it and invest it in Indian stock markets, or should I not do it? And that was a really touching moment. कि अच्छा ये तो फिर मतलब if people are trusting me at this level, then that Then I'm clicking. things are going great. Wonderful. Excellent. Excellent. So now let's do some rapid fire. Sure, sure. Cool. Stocks or real estate? Stocks. What's your number one investment tip in one sentence? Uh, Look at the long-term horizon. Be patient. Okay. The best financial decision that you've made? I invested in myself in learning about stock markets. That's the best financial investment decision. Absolutely. What is that one financial myth you absolutely love debunking? That stock market is a gamble. I also used to believe that stock market सट्टा होता है. हमें movies में ऐसे ही दिखाया जाता है. And I watch a lot of movies, but that's such a big myth. That's such a big myth. If you could have one superpower, what would that be? I would predict stock prices. Oh, nice. I would love to predict stock prices कि कभी all time high पे होगा, कब वहां से गिरना शुरू करेगा. तो जिससे जब भी वो high पे हो तो फिर उसको I can sell it and make profits. And that will also help a lot in my content creation journey. I can actually say कि देखो ये यहाँ पर जाने वाला है. That's cool. That's cool. Of course. Now, what is one most random thing that you've bought with your earnings? That that Oculus Quest 2. That was the most random thing. It's like I've always wanted to own a good video game. I just had that वो बचपन के Mario वगैरह वैसे खेले थे. उसके बाद से I completely lost track of all that. Because I was involved in CA and stuff. तो जब मैंने थोड़े बहुत पैसे कमाने शुरू किए, and I wanted to spend on a good video game, but I didn't know कि कैसे किया जाए. Then I got to know कि यार एक ऐसा device आता है which you can just wear and you can go into another world altogether. So I just bought Oculus Quest 2. That was the funniest stupid investment. Purchase. Huh. Cool. Yeah. Your dream dinner date, billionaire, famous investor, or the world's best chef? I would say none. If my dream dinner date would be, I would go with an actor, most probably Vicky Kaushal. I think his versatility is amazing in films like Sanju or Sam Bahadur or Uri. So dream dinner, I would go with an actor, definitely an actor. Cool. Yeah, Absolutely. yeah. You can only invest in one thing for a year, pets or gadgets. Gadgets, gadgets. If you could swap places with any celebrity for a day, who would it be? शाहरुख खान. बॉलीवुड का बादशाह एक दिन के लिए मैं भी बन के देखना चाहता हूँ कि कैसा रहेगा. एकदम कि कैसा लगता है? Of course, of course. What's your favorite way to spoil yourself after a good financial win? Pizza. Nice. Yeah. Very cool. If you could take a break from finances for a month, what would you do? I would read and learn about filmmaking. Seems like that. What are your hobbies, by the way? Watch movies. I watch a lot of. Well, I love to watch movies. I don't get enough time to watch movies, but I used to watch a lot of movies. I still जैसे ही time मिलता है, I love to watch Put movies. it और थिएटर में जाके theater. उसमें Yeah, it's just a different feel altogether. It's never the same. For some reason, even for me as well, though I keep saying that jana hai, nahi jana hai, but when I'm in the theater, it's just like this. The feeling is something else. exactly. You feel like you're being treated Yeah. right. 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 Now, if you could go back in time to your 18-year-old self and give a solid piece of financial advice, what would that be? भाई ये मत सोच के ज्यादा पैसे कमाएंगे तब स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिंग. जितना भी है, जैसे ही थोड़ा बहुत भी मिले पॉकेट मनी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो.
लेकिन स्टार्ट कर दो, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो. Cool. Funniest financial mistake you've made? Oh, I invested in a stock based on a tip, and that was a penny stock. तो एक मुझे किसी न्यू ईयर पार्टी पे किसी ने टिप दे दी थी, किसी ने बता दिया था, तब मैं काफी नया नया भी था. ऑल्दो आई न्यू कि ये टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट दैट पर्सन सीम लाइक अ लेजिट पर्सन, और उन्होंने मुझे बता दिया था, और मैंने उसमें लगा दिया था. एंड इनिशियली तो लाइक 70%, 80% रिटर्न भी उससे आया था, बट आई थॉट कि ये और ऊपर जाएगा, बट दैट कंपनी इज नाउ डीलिस्टेड फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल द मनी इज गॉन. तो दैट इज द फनीएस्ट मिस्टेक दैट आई मेड. Okay. Well, we all do, We all do. We win. Yeah, we all do that. Yeah, yeah. Now, a book on financial freedom, if you had to write, what would the title be? Uh, from broke to boss. Maybe. Nice. A book on yourself, on your journey, what would that be? The title, what would that be? Book on my journey. 9 attempts strong. It took me 9 attempts to clear CA final exams. So 9 attempts and strong, something like that. 9 attempts strong. I actually thought about it a few years ago that I should write this book. So I must have this. I like the strategy for sure, Yeah, because that will definitely stand out in people's mind. yeah. So 9 attempts strong, something like that. Something along those lines. I refine it a bit more so that it's more So we under. find it. But I think the start is good though. The start is good. Now, what about your life philosophy? Philosophy, mantra. Uh, Never say no to any work that comes your way. Uh, See what happens. I'll tell you a little bit. It cannot be summed up in one sentence, or maybe I don't know how to sum it up in one sentence. Whatever I No, thought. you don't have to sum it up in one sentence. You can talk. The stage is yours today, so you can tell us. Okay, thank you. So basically, whatever I thought I'll become, I could not do it. So I wanted to be an engineer. I wanted to be a Bollywood actor. I'm neither an engineer nor a Bollywood actor. And I use and the things that I used to be completely like कि ये तो मैं नहीं ही कर सकता, ये मैं नहीं करूंगा. I am doing that and I'm enjoying also. Like I never thought I'll get into stock markets. I was also completely against stock markets. As I told you कि movies ने हमें यही सिखाया कि भाई ये तो सट्टा होता है, डैडी मैंने आपके 7 लाख रुपए शेयर्स में गंवा दिए, और ये सारी चीजें हम लोगों ने मूवीज में देखी हैं. So I always thought कि stock market में तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, but I am in stock markets. I always thought कि मैं full time teaching में, regular teaching में कभी नहीं रहूंगा. I am into full time teaching. I never thought I'll have 2 Instagram channels and I'll be creating content like this. I am doing that. So uh, तो फिर मैंने अब फिर ये सोच लिया कि अब मैं प्लान नहीं करने वाला हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है. जो काम आ रहा है उसको करते रहो. बस काम करते रहो. That's my mantra. बस काम करते रहो. That's it. Just keep working. Yeah, Whatever comes your way, just keep working. just keep That's working. the main thing. Yeah. Now, looking back on your journey, is there something you would do differently? I would definitely start investing early. Looking back at my journey, maybe maybe like I just told you that it took me 9 attempts to clear CA final. Maybe I would study harder because I already knew कि कैसे करना है. I don't know, वो laziness या कुछ frustration या जो भी था जिसकी वजह से वो हो नहीं पाता है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं हो पाता है. तो I would probably study harder and clear my CA जितनी जल्दी हो सकता था, so that I can start working and start earning and start investing. That's the only thing. Wonderful. But I don't Wonderful. have any regrets. I think every mistake teaches you something. So Absolutely. That's why I don't like, calling stuff like failures, because you always right, learn something from that failure of yours. So as long as you learn, you're growing. So it's never really a huge regret ever. So now what's next for you? oh, quite a lot of things actually. I am working on 4 to 5 courses as of now, which I plan to launch in 2025. I'm Mhm. currently working on a course on trading from zero. Like, see, this is also one of the things. When I started stock markets, I never thought I'd do trading, but now I'm learning trading and I'm doing a little bit of trading as well. And while I'm learning trading, I'm also creating a course on trading, and I have to make a course on tax planning, mutual funds, futures, and options.
I'm also writing a book on basics of stock market investing because I feel that प्रैक्टिकल तरीके से बेसिक लेवल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसा करना है, एकदम एक्शनेबल स्टेप्स मिसिंग है अभी भी। मुझे लगता है कि एक्शनेबल स्टेप्स कोई नहीं बताता। हम लोग या You फिर mean a step-by-step guide kind of thing? एग्जैक्टली Mm. फॉर बिगिनर्स। Fantastic. So, any other exciting projects that we should know about? I just told you 3 4 these projects. Any more? Sorry, Any others? as I said, अभी मुझे नहीं मालूम if some You're not planning anymore like that. अगर कोई exciting opportunity आएगी तो definitely why not. Wonderful. Excellent. Excellent. So I think it was fabulous talking to you, Nishant. Sure. So, but it was excellent talking to you. Loved every bit of it. And I really hope that this conversation of ours actually makes a huge impact in people. Thank you so much, Devika. It was lovely talking to you. Yeah. Thank you.